ये 3 फरवरी बरोज़ जुमेरात का वाक़या है जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं। एक ख़ातून मुसलमान मुस्कान नामी भारत की रियासत कर्नाटक की रहायशी ये कॉलेज में दाखिल हुई और इससे बदतमीज़ी की गई और इसको हिजाब उतारने का कहा गया। इस पर इसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। मेरी तमाम से गुजारिश है कि हर फोरम पर इसके बारे में आवाज़ उठाएं और इसका साथ दें ताकि इस जो है ना वो ज़हनियत का ख़ात्मा हो। और बिलख़ुसूस सोशल मीडिया जो हमारे एक्टिव दोस्त हैं वो इस बारे में अपना किरदार अदा करें और अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाएं। इस पर शदीद एहतियाज करना चाहिए ताकि किसी की आज़ादी पर कोई हर्फ ना आए। तफसील ये बहन खुद बता रही हैं। Or else you are not allowed to enter the college. If you are interested in wearing the burqa, then go outside. मतलब go for your home. They said like that, but somehow I just went inside and I parked my bike, and then I was coming. So there a lot of boys were crowded and they started giving their slogans, and they said me to remove burqa or else you are not allowed it. And they like something. They came near me as they are attacking me. So even there, I just like, I don't wanna bring any casteism here. I'm not fighting for that. I'm just fighting for my rights. Please, I request everyone, do not trouble a student. We are not fighting for any casteism here. We are just fighting for our rights. So that I hope so you understand. I just see a lot of status uploading and encouraging a people between Hindu and Muslim. We are not fighting for that. I'm fighting for my right, for my education. That's it. That they should allow, because like every religion has a freedom. Everyone has a right to follow their culture. So hijab is a priority.